Very good evening, ma'am. Would you please turn on your camera? We are very grateful to you that you have invested your time here. With your permission, can we start this talk show? Yeah, yeah, sure. A very good evening to everyone present here. I am Shivansh Rastogi from Salaah, the mentor community of ABES Engineering College, and I'm here to introduce you to our guest of the evening, Darshika ma'am. Currently, she is in fourth year and a part of mentor-mentee board in Salaah, who recently got placed in Veersa Tech. She has been involved in many co-curricular activities like dance and fashion throughout her college life. I hope that this Senior Insights event would show us a pathway to balance our college life and get the best out of it while providing you all a platform to ask your doubts. I would also like to introduce you all to our host, Dev Tevatia. He is one of us from Team Salah who would be conducting this event with Darshika ma'am. Thank you, Shivansh. Let me take this proceeding forward. Thank you, Darshika ma'am. Hello. Uh, Hello, am I audible? Thank you, Yes, Darshika ma'am, you ma'am, are for being audible. here to give your valuable time to our ABS students. You're most welcome. It's my honor to be here. Okay, so let's start the session. So, ma'am, at first, can you please introduce yourself and your academic background in college? Okay, so as you all know, right now I'm working as a software engineering intern in Veersa Technologies. Before this, also right now I'm in fourth year in CSC AIML branch, and I have learned everything that I could from my college and my seniors, and yeah, that's it. In school, I did not have computer science, but yeah, I'm from science background. Of course, everyone does engineering after science only. Okay, ma'am. Ma'am, could you share a bit about the corporate job you recently landed and the industry you are working in? Yeah. So I got the job on campus only. The company is called Veersa Technologies. It's a client-based company which create projects for clients, right? So I am working as a software engineering intern, and it 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 was uh, it was really surprising for me as well that I got the chance that I got selected. So yeah, so right now I'm working in testing team. I'm working with a team. So yeah, that's it. Okay, ma'am. So, ma'am, let's talk about your college life. Like, how have you grown and developed as a person during your college years, both academically and personally? Okay, college had a very big impact on me, both personally and professionally. So first of all, the our college focuses a lot on our personal development. What I can say is uh, when you go into college, you start learning things by yourself, right? कि आप college में it's all right if I use both the languages, right? Hello. Ma'am, can you share some of your fondest memories from your college time? Okay, some of my fondest memories from college time is uh, uh, there's not been any particular incident, but all the time, like I was too much into extracurricular activities. I was into dance. I was into sports, but I was into what you can say. I was into events, I was into clubs and communities. So, if I have organized a lot of events, right? So, organizing those events along with the whole team, that was one of very big part of me. That is what I loved the most. It helped me grow as a person, and I had a lot of fun with it as well. So, yeah. Also,
one of the very memorable moment for me is uh, when I performed in the opening of Genro. So that was a very big deal for me. I did an opening performance in Genro, as you all know. So yeah, that was one of the very memorable moments for me. Okay, ma'am. So, ma'am, what do you think is the biggest misconception about college life or the transition, the workforce that you would like to debunk? Misconception about college life, that it's Yes, ma'am. only fun. Yes, uh, ma'am. you get it. It's not just fun. It is fun. But it's not only fun, especially when you're in engineering. uh, it's not just fun. It is hard work. It is dedication along with the fun. So yeah, that's what I think. That everybody just thinks that you go into college and just you do fun and then you just graduate. That's not how it is. Okay, ma'am. So, ma'am, are there any professors or mentors who have had a profound impact on your college journey? Yes. Uh, there were some of my mentors. My seniors were my mentors. और basically मैं frankly बोलूँ तो somewhere they had such a big impact on me. मतलब उन्होंने जो जो मुझे बताया कि ऐसे करो और ट्राई डूइंग दिस एंड जितनी भी उन्होंने एडवाइस दी हैं some of my seniors and they always helped me. So yeah, some of my seniors had a very big impact on me. तो मैम आप कोई वैल्यूएबल लेसन्स जो उन्होंने आपको दिया हो वो आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? uh, ठीक है. some of the lessons are जैसे पहली चीज कि मतलब जब आप शुरू कर रहे होते हो ना व्हेन आप सीखना शुरू कर रहे होते हो या फिर आप जैसे क्या करते हैं बच्चे प्लेसमेंट की तैयारी शुरू करने लगते हैं कि आप सीधा डीएसए करने लगते हैं या सीधा सिर्फ जो प्लेसमेंट में पूछते हैं वो करने लगते हैं. बट माई सीनियर्स टॉट मी कि तुम प्लेसमेंट लेने के लिए मत पढ़ो, तुम अपनी नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ो. जितना तुम्हारे पास नॉलेज होगी वो सामने वाले इंसान को दिख जाएगा. So that is one of the very big valuable lessons, that study to learn, to gain knowledge, not to get a job. Okay, ma'am. Ma'am, can you share your contributions to the college and communities? Okay, my contributions. ठीक है. तो ठीक है, I was in 2 3 clubs and communities, all of them included. So second year में I've contributed in the cultural society, in one of the technical society, and in the alumni society as well. So मैंने काफ़ी events organize करने में help किए हैं along with my team. Then uh, I've also been in the organizing team of Genro. Uh, yeah, I've also played volleyball from our college in zonals in my second year. So that are some of the things that I have done. So, ma'am, how did you balance your academic commitments with your passion for dance during college and like volleyball, as you said? Uh, to be honest, it was not easy. मतलब इतना आसान नहीं होता ये सब कुछ मैनेज करने का. बट एक वो होता है ना, एक एक आपके अंदर वो होती है कि मुझे ये करना है ना. जहाँ तक रही एकेडमिक्स की बात, तो मतलब एकेडमिक्स समहाउ समवेयर लास्ट डे तक कैसे भी मैं कर लेती थी कि थोड़ा बहुत क्लासेस में बैठे हैं तो ध्यान से सुन लिया कि टीचर क्या कह रही है वो ध्यान से सुन लो. अगर हम क्लासेस में सुन लेते हैं तो लाइक 50 to 60% समझ आ जाता है. देन एग्जाम से पहले पढ़ लो ऑफ कोर्स. Then dance is something that I love doing, right? So matlab, even if I didn't had time or if I didn't had the strength to do it after attending the whole day in college, I somewhere found the strength. मतलब ऐसा होता है ना कि थक जाते हो आप, तो आपको लगता है कि अब तो कॉलेज हो गया, अब क्या करें, अब घर जाके रेस्ट करना है. बट फिर
कॉलेज खत्म होने के बाद फिर हम प्रैक्टिस करते थे। सैटरडे संडे को वी यूज्ड टू कम एंड प्रैक्टिस। वॉलीबॉल की बात जहाँ पे रही तो सुबह 6 बजे वॉलीबॉल की प्रैक्टिस होती थी, तो मैं सुबह 6 बजे कॉलेज आती थी, फिर पूरे दिन कॉलेज करती थी। तो मतलब इफ़ यू हैव दैट विल टू डू थिंग्स तो वो हो जाता है। लाइक मैम ऐसा कहते हैं कि कॉलेजेस में इन सब में इन्वॉल्वमेंट रखो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्डअप करो, नेटवर्किंग बढ़ाओ। सो मैम, व्हाट आर योर थॉट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग पर्सनल रिलेशनशिप्स एज यू प्रिपेयर टू एंटर द जॉब मार्केट? यस, मतलब एज यू सेड इट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। मतलब जितना आप लोगों से बात करोगे, जितना आप नेटवर्क करोगे, उतना लोग आपको जानेंगे, राइट? तो creating relationships is very important in communication. Networking is the most important, you can say. जितना आप लोगों से बात करते हो, जितना आप you know उनको बताते हो, उनसे बात करते हो, नेटवर्किंग करते हो, कनेक्शंस बनाते हो, इट इट क्रिएट्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट कि लोग आपको जानते हैं। जैसे आई यूज टू डू डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो आई स्टार्ट मतलब व्हेन आई स्टार्टेड तो आई हैड सम नेटवर्क्स विद माय सीनियर्स, सॉरी, या आई हैड सम नेटवर्क्स विद माय सीनियर्स। तो मतलब जब भी मुझे छोटी सी भी प्रॉब्लम आती थी तो आई यूज टू टेक्स्ट देम और आई यूज टू आस्क देम ऑन डिस्कॉर्ड और ऑन एनीवेयर, तो दे ऑलवेज यूज टू कम एंड हेल्प मी, है ना? ऐसे ही जस्ट जब मैं सीख गई देन आई हेल्प माय जूनियर्स। तो इट मतलब वो आपको कॉन्फिडेंस भी देता है और उससे आपको नॉलेज भी मिलती है। तो नेटवर्किंग हैज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट्स व्हाट आई वुड से। Okay, ma'am. So, ma'am, let's talk about your work life. Like, what does your typical day look like in your current corporate job? Okay, so right now I'm working from home from past 15 days. Before that, my job was in hybrid mode. So I used to go to office for 3 days, and then I used to work from home for 2 days. So that was pretty easier for me, to be honest. That it was when I used to leave around 8:30, and then I used to come around 6. So uh, it's little bit tough but it's fun. जब तक आप मेहनत नहीं करते तब तक आपको रियलाइज नहीं होता कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है ना? तो मैं जाती थी, आई ट्रैवल अराउंड 40-50 minutes and then I used to work there, then I used to come back, then I try to do something of myself, my dance or something. Then yeah, that's it for 5 days a week. Then Saturday Sunday is off. So yeah. So, ma'am, like, नई जगह, नए लोग, नया role. So, ma'am, could you describe your new role in the corporate world and the company you are working for? um, uh, uh, ठीक है, तो द कंपनी आई एम वर्किंग फ्रॉम इज हैज़ अ वेरी गुड एनवायरनमेंट। मतलब आई डेंट एक्सपेक्ट इट बट उनका एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। एवरीबडी इन माई टीम एंड एवरीबडी आई हैव टॉक टू अ वेरी ओपन टू कम्युनिकेशन, है ना? सो right now I'm working in testing team and I'm working on Cypress. तो मतलब Cypress I've never worked before. When I got selected for this job तो मैंने काम करना शुरू किया, मैंने सीखना शुरू किया, and my seniors and everyone were very supportive, and whenever I wanted to ask any questions, any queries, they were always there. So the environment in my company is pretty good. देयर इज़ नो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इस टाइम पे ही आना है या इस टाइम पे ही जाना है, या फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। सो या, इट्स गुड। So, ma'am, how do you approach networking and career development, like as you did in your industry? नेटवर्किंग के लिए ना आपको लोगों से बात करनी शुरू करनी पड़ेगी। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो बोल ही नहीं पाते, है ना? तो अभी लाइक राइट नाउ इन कॉलेज लाइफ यू हैव टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग कि फाइंड पीपल हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट लाइक यू, और फिर उनसे बात करो, उनसे कम्युनिकेट करो। For college student you can also go to hackathons. Matlab I went to 2 or 3 hackathons. I wanted to go to more but I couldn't somehow. But yeah, hackathons
play मतलब when you go to hackathons you see a lot of people and then you know communicate with them. आप पहचानते हो उन्हें, आप जानते हो, आप उनसे पूछते हो कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, आप किस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, कैसे काम करते हो, तो आपको नई नई चीज़ें पता चलती है। तो आप ऐसे कर सकते हो। एंड व्हेन इट कम्स टू जॉब देन यू नो यू जस्ट whenever you feel like talking to somebody, just go and talk to them. That's what I think कि do not hesitate to talk to anybody, right? मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप फ्रैंकली जाके मतलब यू नो बहुत ज़्यादा बात ही करते हो, ऐसे नहीं है। आप जाओ उनसे प्रोफेशनली बात करो, अपना इंट्रोडक्शन दो। तो या दैट्स इट। ऐसे लाइक यू नो यू डू इट एंड यू लर्न, दिस इज हाउ यू लर्न न्यू थिंग्स। ओके मैम। सो बट मैम एक चीज आती है ना, लाइक टाइम मैनेजमेंट आता है कि हैकाथॉन और इन सब के लिए बाकी एक टाइम नहीं निकल पाता। सो लाइक हाउ डू यू इफेक्टिवली मैनेज योर टाइम एंड सेट प्रायोरिटीज टू अचीव योर गोल, लाइक both in job and outside of it? Are you talking in when I was in college or right now? Ma'am, college? I'm asking, are you talking about when I was in college or how do I do it now? Ma'am, both. Both, Like okay. when obviously when you are in college, when you was Okay. in college. Okay, so when I was in college, I used to travel an hour. मतलब my home is an hour away from college, so I used to travel up and down daily. स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी कि फर्स्ट ईयर तो वैसे ही ऑनलाइन निकला था, तो वो हमारे लिए एक एडवांटेज था। बट सेकेंड ईयर से बहुत मतलब होती थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी कि इतना दूर जाके पूरे दिन क्लासेस लो, फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने का। तो मैंने क्या निकाला था अपने लिए कि मैं कॉलेज जाती थी और मतलब सुबह चली जाती थी मैं। एंड कॉलेज 4:30 ख़त्म हो गया, 5 तक मैंने एक मतलब यू नो बात कर ली, चिल विल कर लिया दोस्तों के साथ। उसके बाद आई यूज़ टू कम होम एंड आई यूज़ टू रेस्ट फॉर 30, 35, 40 मिनट्स प्रॉपरली, कि कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर उसके बाद मैं लैपटॉप लेके बैठती थी और जो मुझे करना होता था कि मुझे डेवलपमेंट में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं ऐसे करती थी कि मैं 2 घंटे मतलब ब्रेक ले लेके आफ्टर एक आवर के बाद काम कर लिया, ब्रेक ले लिया, फिर 1 घंटे और काम कर लिया, फिर ब्रेक ले लिया। ऐसे मैं काम करती थी और मैं एक टास्क सेट कर लेती थी कि मुझे आज इतना करना ही करना है। तो अगर आपका इंटरेस्ट होता है तो आप जैसे थोड़ा सा रेस्ट करके एक बार आप लेके बैठ जाओगे ना, तो आपका इंटरेस्ट होगा, आप तब भी कर लोगे। तो एक मतलब सम ऑफ द टाइम आई यू नो आई डिड दिस। थोड़ा सा स्टार्टिंग में गड़बड़ भी हो गया था कि आई यूज टू कम एंड देन आई यूज टू स्लीप। मैं कॉलेज से आके सो जाती थी 2-3 घंटे, फिर मैं उठ के डिनर विनर करके एंड देन आई यूज टू स्टडी इन नाइट। तो जो भी आपके लिए इजियर पड़े तो वैसे कर सकते हैं, बट आई इनकरेज कि आप दिन मतलब शाम को पढ़ो, क्योंकि रात को पढ़ना इज़ नॉट गुड फॉर योर शेड्यूल। मैम लाइक जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर में भी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं ना, तो अगर एक रूटीन सेट करें कि पढ़ाई के लिए रात को एक रूटीन बना लिया या फिर सुबह, बट मैम वो रूटीन फॉलो नहीं हो पाता, तो उसके लिए क्या करें? रूटीन फॉलो नहीं हो पाता मतलब टू बी ऑनेस्ट इसका कोई तोड़ नहीं है ना। इसके लिए आपको आपको खुद ही करना पड़ेगा कि आपको वो अपने अंदर मोटिवेशन ढूँढनी पड़ेगी कि मुझे करना ही करना है ना? ऐसा होता है कि कभी-कभी होता था कि मेरी डांस प्रैक्टिस होती थी, तो मैं घर आके नहीं पढ़ पाती थी, तो मैं वीकेंड में पढ़ जैसे मैं ना 6 डेज़ का प्लान बनाती थी अपना और मैं संडे हमेशा खाली रखती थी कि अगर कहीं जाना पड़ गया या कुछ हो गया, तो किसी भी दिन का अगर मेरा छूट जाता था ना, तो मैं एक-एक दिन सब कुछ पोस्टपोन करके उसको संडे तक कंप्लीट कर लेती थी कैसे भी। तो टू बी ऑनेस्ट मैं कितना भी आपको हैक्स बता दूँ, कुछ भी बता दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू विल हैव टू डू इट ऑन योर ओन। जब आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगी ना कि मुझे करना ही है, कि मुझे सीखना है, तभी आप कर पाओगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मोटिवेशन आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर आपके अंदर कितनी भी मोटिवेशन है और आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि आप लेके बैठ जाओ, आप पढ़ लो, पर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर यू नो समवेयर और द अदर इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड व्हाट यू लव। फाइंड व्हाट यू नो कि आपको क्या करना पसंद है,
उसे ढूंढो, और फिर जब आप उसे करोगे तो आप खुद टाइम ढूंढ लोगे उसके लिए। तो मैम वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस मैम, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर में इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं तो कभी कभी लेक्चर्स बंक हो जाते हैं, सो छूट जाता है कंटेंट जो डिलीवर हो रहा होता है। तो मैम फिर आगे से वो चीज़ समझ नहीं आती कि चल क्या रहा है, सो उसको कैसे कंप्लीट किया जाए? एक टू बी गैप सा ऑनेस्ट, मेंटेन होता चला जाता है फिर। हाँ, हाँ, लेक्चर्स छूट जाते हैं। टू बी मैं सच बताऊं तो मैंने जो भी हमारी एकेडमिक्स वाली पढ़ाई थी वो समवेयर और दी अदर, मतलब मेरा भी छूट जाता था कि सुबह लेट हो गई थोड़ा सा तो नहीं पहुंच पाए, ऐसा हो जाता है। तो फिर ना उसके बाद आपको खुद करना पड़ता है कि आप यूट्यूब से देख लो। यूट्यूब में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर टीचिंग एंड दे आर टीचिंग वेरी गुड। यू गेट some notes from some of your seniors और यू नो समथिंग लाइक दैट। मतलब अगर आपका 2-3 दिन का मिस हो गया है तो आप कोशिश करो कि आप उससे कोप अप कर लो। और अगर आपसे कोप अप नहीं हो रहा है तो आप उस यूनिट को ना, जैसे ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं है, बट आप उस यूनिट को फॉर टाइमिंग लीव लीव कर दो, और जो चल रहा है नया, जो आपको समझ आ रहा है क्लास में, उस पर ध्यान दो ताकि आपका वो भी मिस ना हो जाए, राइट। तो उसके बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो पुराना वाला देख लो और बाद में यूट्यूब से और समवेयर रख दिया जाए। और मैम जो अगर कुछ भी समझ आ ही ना रहा हो तो? तो फिर आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा कि टीचर कहाँ तक पहुँच गई है, टीचर ने कहाँ तक पढ़ा दिया है, वहाँ तक आप कैच अप करो घर पे पढ़ के, और फिर उसके बाद क्लास में सुनो। ओके Otherwise, you मैम। can also मैम क्या? take help. यस मैम। I'm saying otherwise you can also take help from, your classmates if they listen in class. यस, यस मैम। Yeah. मैम वो अ, जब पेपर होता है उससे एक दिन पहले वही काम आते हैं। Exactly. ओके, सो मैम कैन यू गिव सम लाइफ लेसन्स व्हिच यू माइट थिंक वुड हेल्प योर जूनियर्स? Life lessons. ठीक है। तो यस मैम। लाइफ लेसन्स तो नहीं, बट दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड डू इन योर इंजीनियरिंग, राइट। पहले तो अपने सीनियर्स और अपने जूनियर्स से कनेक्ट बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। I've said it twice, I guess, before. I'm saying it again that you need to make connections with your seniors and juniors, because what you're going through, your seniors have gone through the same, right? And what you have gone through, your juniors are going to go through the same. तो अगर आपको किसी से हेल्प मिली है तो आप उनको भी हेल्प करो। दैट इज व्हाट आई थिंक दैट एवरीवन शुड डू। सेकेंडली कि along with your academics, आप जिसमें भी हो, जिस भी ब्रांच में हो, along with your academics, you need to find what domain you want to do, what domain do you love doing, that मतलब you have to try out things। जैसे मैंने क्या किया था अपने फर्स्ट ईयर में, तो मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ मैंने academics की थी। But from second year when I talk to people, then I realized that I have to learn things on my own as well. So then I started doing development. Then I learned HTML. Then I learned CSS. I went to JavaScript, and luckily for me, this was the thing that I wanted to do. This was the thing that I liked. But ऐसा सबके लिए नहीं होता कि जो पहली चीज़ आप ट्राई करो वही आपको पसंद आ जाए। तो there are a lot of domains. There's front end development, there's back end, there's full stack, there's Android, there's cyber security, a lot of things that I can't even think about, blockchain, और पता नहीं क्या क्या। तो यू नीड टू, मतलब थोड़ा सा ना आपको घूमना पड़ेगा, आपको देखनी पड़ेगी कि एक एक चीज थोड़ी थोड़ी करके देखनी पड़ेगी कि आपको क्या करने में मजा आ रहा है। एंड देन फाइंड व्हाट यू वांट टू डू, फाइंड व्हाट यू लव डूइंग। एंड अगर आपको वो मिल गया ना, देन ट्राई टू बी द बेस्ट इन दैट। दैट्स व्हाट आई कैन से अलॉन्ग विद योर एकेडमिक्स। जो भी डोमेन आपको पसंद आई है उसको, उसमें अपना ऐसा बनाने की कोशिश करो कि कोई भी आपसे आकर कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको पता हो उसका आंसर, राइट। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मेकिंग योरसेल्फ टेक्निकली साउंड बाय योरसेल्फ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, और यू कैन look around for things, you can look around on domains, and
Yeah, that's what you should do. That is one of the very important things, to find what you love doing. Okay, so ma'am, could you share any significant mistakes or setbacks you have encountered in your career and what you learned from them? Um Mistakes. मिस्टेक्स तो बहुत सारी करी हैं बट मतलब डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ दैट आई नो एवरीथिंग, राइट? कभी कभी ऐसा हो जाता है जब आप थोड़ा सा सही करने लगते हो, थोड़ा सा आप सीखने लगते हो, एंड यू गेट सम पीपल विद योर बाय योर साइड, देन यू स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम द बेस्ट, आई नो एवरीथिंग, दैट it can never happen. There is always somebody much better than you. Matlab, this is not my mistake, but I have seen people doing this, and somewhere or other you realize that you are equal, and everybody is going through the same. Yeah. And one another important mistake that what I did is, what I thought that, मतलब मैं जब आई थी फर्स्ट ईयर में, तो जो भी मेरे साथ के थे, एवरीबडी हैड कंप्यूटर साइंस इन देयर स्कूल, तो सबको पता था कि क्या होता है, ऐसे कैसे चलता है। पर मैंने इकोनॉमिक्स ली थी स्कूल में, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कोडिंग का, कैसे क्या होता है। तो आई गॉट रियली स्केर्ड, मुझे ऐसा लगा कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मतलब, तो ये नहीं सोचना है, जितना तुम्हें आता है, मतलब जितना बाकियों को आता है उतना तुम भी सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें अभी नहीं आता है इसका मतलब तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो आई गॉट, मतलब मैं थोड़ी सी वो हो गई थी, डर गई थी कि सबको यहाँ पे आता है, एंड आई फेल्ट लिटिल आउट ऑफ प्लेस, कि यहाँ पे एवरीबडी नोज एवरीथिंग एंड आई डू नॉट नो एवरीथिंग एंड एवरीथिंग। तो देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, देन आई रियलाइज दैट आई एम नॉट द ओनली वन दैट डोंट नो एनीथिंग, है ना? मेरे जैसे और भी लोग थे, मैं उनसे मिली। फिर मैं उनसे मिली जिनसे मुझे डर लगता था बात करने में, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा आता है, तो उन्हीं लोगों ने मेरी हेल्प करी सीखने में। तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को आता है वो ऐसा कुछ करेंगे कि यू गेट स्केयर्ड ऑफ देम दैट दे नो उनको काफ़ी चीज़ें आती हैं एंड यू फील लो। नो, अगर आप उनसे जाके बात करोगे तो मे बी दे विल हेल्प यू, and you're not alone, of course. Okay. So, ma'am, what skills or knowledge have you gained in college that you believe will be most valuable in your future growth or career? uh, Team spirit. Team spirit is one of the things that I learned. मतलब event organization तो है ही, but along with it I learned how to work with people, learned how to communicate professionally, and how to make those professional and personal bonds. No, I worked with a lot of people. मतलब uh, I worked with my seniors in clubs, in communities. उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि आप कैसे मिस हैपनिंग्स को अवॉइड कर सकते हो, और अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो आप उसे कैसे फिक्स कर सकते हो। तो that is one of the things that I learned. Also, पेशेंस। पेशेंस, कॉलेज ने मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंस सिखाया है, कि जो मतलब पहले आई आई डिडंट हैड इनफ पेशेंस, बट इंजीनियरिंग आपको पेशेंस सिखा देती है। तो या, पेशेंस इन कम्युनिकेशन, टीम वर्क, और ऑल द थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम कॉलेज। Okay, so ma'am, as you reflect on your college years, is there anything you wish you had done differently or any regret you have? It's a very small incident, but when I was in second year, I got an opportunity to perform on stage with the whole team. And somewhere or the other, I declined that opportunity because of some other duties. So I wish I would have, worked more on myself, on passion.
एंड ऑल्सो मैंने डांस, मतलब डांस के लिए या मतलब कुछ कुछ अपनी स्टडीज की वजह से मैंने थोड़ा सा डांस को छोड़ा, मैंने थोड़ा सा वॉलीबॉल को छोड़ा। तो आई विश कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल पाता कि मैं थोड़ा सा उन्हें और थोड़ा सा और उनमें जा पाती। दैट्स व्हाट आई थिंक। Okay, ma'am. So, ma'am, any advice for juniors? Like, can you share some key lessons you have learned during your transition from college to corporate world? कॉलेज टू कॉर्पोरेट, अभी तो मैं कॉलेज में Yes, हूँ ma'am. यार, मुझे इतना निकालो मत अभी कॉलेज से। 1 साल बचा है मेरा। हाँ। कॉलेज में यू आर अ स्टूडेंट, है ना, जिसमें आपको पढ़ाई करनी है नहीं करनी है आपकी मर्जी, है ना। आप लास्ट डे पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको रोज ही पढ़ना है, आप आराम से कर सकते हो। पर जब आप कॉर्पोरेट में चले जाते हो, देन यू हैव अ टास्क, देन यू हैव अ डेडलाइन, तो इट्स लाइक आप छुट्टी नहीं ले सकते। ऐसा बात नहीं है कि मतलब छुट्टी एज इन कि घर पे बैठ जाओ, देयर आर नो ब्रेक्स इन लाइफ वंस यू एंटर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो आई वुड एडवाइस कि जब तक आप कॉलेज में हो, एंजॉय इट। Okay, ma'am. So, ma'am, what advice you have for juniors who are just starting their journey and are looking to make the most of the college experience? Like उन्हें फन भी करना है और पढ़ाई भी करनी है और उन्हें प्लेसमेंट भी बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। प्लेसमेंट के पीछे भागोगे तो नहीं मिलेगी प्लेसमेंट। मजाक कर रही हूँ मैं। तो जैसे तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, इफ यू आर जस्ट ज्वाइनिंग, तो पहले तो बातचीत करना शुरू करो अपने सीनियर से, नेटवर्किंग शुरू करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने की कोशिश करो। सेकेंडली, कहीं ना कहीं से यू विल गेट दो सीनियर्स दैट विल हेल्प यू, एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग डोमेन्स अलॉन्ग। वैसे कॉलेज का बहुत प्रेशर होता है, आई अंडरस्टैंड कि फर्स्ट ईयर में बहुत वो होता है। तो पहले तो क्लब्स या कम्युनिटीज ज्वाइन करो, दैट विल हेल्प यू ग्रो अ लॉट। कम्युनिटीज एंड क्लब्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉलेज लाइफ, स्पेशली माइन। तो क्लब्स एंड कम्युनिटीज ज्वाइन करो, टेक्निकल कम्युनिटीज ज्वाइन करो। uh, तो यूल अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। फिर अपने सीनियर से कांटेक्ट करो, एंड देन जब आपको थोड़ा सा स्टेबल लगने लगे कि हाँ आप थोड़ा सा फेमिलियर हो गए हैं हम, इट दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर्स, देन स्टार्ट वर्किंग, है ना। जैसे काफ़ी सारी डोमेन्स होती हैं, आपने सुना होगा कि देयर इज वेब डेवलपमेंट, देयर इज एंड्रॉइड डेवलपमेंट, देयर साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, वेब 3.0, बहुत सारी डोमेन्स होती हैं। तो सबको थोड़ा थोड़ा, मतलब सबको नहीं, मतलब स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, अपने पे काम करना शुरू करो टेक्निकली। तो जैसे आप शुरू करोगे ना, you'll गेन कॉन्फिडेंस, आपको पता चलेगा कि आई कैन डू समथिंग, कि मुझसे हो पाएगा कुछ। तो हाँ, मतलब स्टार्ट वर्किंग, शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरा दिन पढ़ते ही रहना है, 2 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ लिया, देन फन करो। कॉलेज में हो तो कॉलेज में रहो, बातचीत करो, खेल कूद करो, स्पोर्ट्स बजाओ, मजे तो आते ही हैं यार कॉलेज में। Ma'am, are there any specific skills or competencies you believe students should develop while in college? यस, कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट। Sorry. मतलब अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है और आपके पास स्किल्स है कि यू कैन गो अप एंड टॉक टू एनीवन, देन यू कैन अचीव एनीथिंग। अगर आपको बोलना आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो या कम्युनिकेशन स्किल्स आर सम ऑफ द थिंग्स दैट you should achieve during your college life. Okay. So, ma'am, any inspiration and future goal आपका? फ्यूचर गोल्स तो बहुत सारे हैं यार, अभी तो शुरुआत ही करी है, बस कहीं ना कहीं बड़ा जाके रुकना है। बट And ma'am, अभी inspiration?
इंस्पिरेशन इज मेरी इंस्पिरेशन है इंडिपेंडेंस कि आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट इनफ कि आई डू नॉट हैव टू बी गेट सपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर. तो मतलब that feeling of independence is what drives me the most. Ma'am, can you share a book, movie, or experience that has had a significant impact on your personal and professional growth? हम्म, यार मूवीज तो मैं मज़े के लिए देखती हूँ. मूवीज मेरे पे इम्पैक्ट नहीं करती. बट देयर इज अ बुक. मतलब मैं बुक ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ. आई डोंट रीड टू मच बट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ रीडिंग हैबिट. सो इट वाज अ बुक आई रेड. द सटल आर्ट it's a book. It had a very big impact on me. It taught me that uh, you do not need anybody. You can have, but you do not need anybody to be happy. Right? So yeah, it's one of the book I'll recommend a lot of people. Okay. So, ma'am, can you describe your plans for after graduation? As अभी तो आपने प्लेसमेंट ले लिया, बट आगे कुछ और अदर प्लान्स हो आपके? Uh, मैं पहले सोच रही थी कि मैं आगे पढ़ूंगी बट समवेयर और द अदर आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल इन मतलब अभी 2-3 साल आई एम गोइंग टू वर्क इन द इंडस्ट्री. आई एम गोइंग टू सी कि कैसे चीज़ें चलती हैं कैसे काम होती हैं. देन वील डिसाइड व्हाट विल हैपन. क्या या मतलब I want to see how things work in the corporate industry and then we'll decide if I want to do something else or if I want to stick to it. Okay, ma'am. So, ma'am, how will you describe your college life in one sentence? Interesting. What, ma'am? Interesting. Okay. Is there anything else or any message, suggestions you would like to share with the audience, especially for those with a passion for dance and creative interests? Uh, यार डांस वालों के लिए तो ये है जब भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले ना कभी छोड़ना मत. बाद में रिग्रेट होता है. बट हाँ मतलब इफ यू लव डूइंग समथिंग डू इट. दैट्स व्हाट आई थिंक. अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है या इफ यू लाइक समथिंग अदर देन टेक then do it. It's not important to make a career in technology only if you are in engineering. जो भी आपको करना पसंद है आप उसे करो. अगर आप उसमें अच्छे मतलब अगर आपको पसंद है तो ऑफ कोर्स you'll be good in that. So you can make a career out of it. So yeah. And for everyone go out there and talk. लोगों से बात करना शुरू करो. That's what I. Okay, ma'am. So, last question from my side. What's your piece of advice that you would like to share with us? Uh, piece of advice. मतलब do not take everything very lightly, but do not get so stressed about everything that you do not have any fun in your life. मतलब you need to make a balance in your fun and your studies and whatever you want to do. If you do everything with a cool mindset, you can achieve anything. Okay, ma'am. So, ma'am, in a fun way, हमारे पास एक दिस एंड दैट राउंड है जिसमें हम आपको दो ऑप्शंस देंगे. उसमें से Okay. आपको कोई एक चूज करना है. सो कैन वी uh, स्टार्ट? ठीक है. Okay, ma'am. So first question is favorite memory. First day at company or first day on college campus? कॉलेज तो ऑनलाइन था फर्स्ट डे हमारा तो कैंपस सॉरी कॉर्पोरेट सॉरी क्या फर्स्ट डे तो Okay, ऑनलाइन ma'am. था कॉलेज का. Most cherished college achievement or your most hilarious college incident? अचीवमेंट. I'm not. Okay, ma'am. So second question. Which type of student you were? Student study before one night of exams or the study before or the study entire semester?
One night before the exam. One night before. One night before the exam. Okay, ma'am. 9 to 5 job or a flexible schedule with remote work option. हाइब्रिड दोनों दोनों का हाइब्रिड एक दिन 9 to 5 नाइन अगले टू दिन फिर घर से काम करो हाइब्रिड मतलब मेरा जो इससे पहले वाला था अ, वो क्या था इससे पहले जो मैं जैसे मैं जा रही थी अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम हो गया रिमोटली इंटायरली इससे पहले मेरा था 3 days यू गो 9 to 5 एंड देन 2 days you work from home so that is the best I think both of them combined you get benefits of both. बट मैम अब वो कोरोना वाला वो टाइम नहीं था बट अब ये हमें भी मिल सकता है क्या? मिल जाएगा यार अभी भी बहुत सारी कंपनीज यही फॉलो कर रही है हाइब्रिड मोड. Okay, ma'am. So another question. Job satisfaction derived from a high salary or work that aligns with your passion and values? Work that aligns with my passion and values. Okay. Clear and direct communication or diplomatic and tactful communication? Clear and direct communication. Maybe some sarcasm. Sarcasm to tha. Okay. So attending any dance show or performing in a dance show? Performing always. Okay. So now we will take the questions from the audience. Anyone who wants to ask any question, you can ask now one by one. Please raise your hand. Hello, ma'am. Hello. I'm Kashi, PACDS, second year. Okay. So I have a Hi. question. How do you maintain a healthy work-life balance while multitasking, and do you even find time for relaxation and self-care? ओके तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लाइक करते हुए 3 महीने हुए हैं अभी जॉब करते हुए बट मतलब यू हैव टू सेट सम बाउंड्रीज मतलब जैसे अगर आपका 9 to 5 है तो आप ऑफिस में ख़त्म कर दो एंड से सम मतलब जैसे भी आपका कोई सीनियर है ही इज आस्किंग दैट यू डू थिंग व्हेन यू गेट होम सो टेल देम मतलब उनको कुछ बोल दो दैट आई नॉट बी एबल टू डू इट समवेयर और द अदर तो यू नीड टू पहले तो यू नीड टू क्रिएट गुड कनेक्शंस ताकि आप उनसे ये चीज़ फ्रैंकली बोल पाओ है ना ताकि तुम बाउंड्री सेट कर पाओ बट इट विल नॉट बी दैट रूड तो सेट बाउंड्रीज मेक कनेक्शंस तो यू विल गेट टाइम फॉर योर सेल्फ and do not work on weekends ever even if they pay you extra don't work on weekends. Okay, ma'am. Thank you so much for the answer. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, my name is Utkarsh Sharma and I am from CSCDS second year. Ma'am, my question is that what's one piece of advice you wish you had received when you were in audience position? Oh. Never say no to an opportunity when it presents itself. जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए ना तो उसे ले लो चाहे आपको लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा मेरे बस की नहीं है मुझसे होगा कि नहीं होगा उसे ले लो जैसे मेरे साथ हुआ था सेकेंड ईयर में एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आई थी एंड मतलब मुझे इतना आता नहीं था तो वन ऑफ माई सीनियर सेट कि ट्राई कर इंटरव्यू दे तो मैंने इंटरव्यू दिया एंड समवेयर और द अदर वो क्लियर हो गया मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि वो क्लियर होगा कैसे भी क्लियर हो गया फिर मैंने वो इंटर्नशिप करी तो मतलब 2 महीने इंटर्नशिप करी मैंने और उससे बहुत कुछ सीखा तो अगर मैं इसे मना कर देती तो मतलब वो लर्निंग नहीं हो पाती जस्ट बिकॉज मैंने सोचा कि मैं नहीं कर पाऊंगी तो या नेवर से नो टू एन अपॉर्चुनिटी अगर वो टेक्निकल है नॉन टेक्निकल है कैसी भी अपॉर्चुनिटी हो कभी मना मत करो. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. I guess some more people have their hands raised. Shrishti Rajput. Hello, good evening, ma'am.
Good evening. I want to ask, मैम जैसे कि हमें सबको पता है कि अभी रिसेशन चल रहा है एंड हमारे पास जॉब्स बहुत लिमिटेड है। मैम Mm. इस टाइम पे कंपनी की क्या डिमांड है, मतलब वो क्या देखना चाह रही है रिक्रूट करते टाइम। तो Just मतलब give बच्चे me नीट नहीं 1 minute. 1 मिनट दो मुझे, मेरा चार्जर बैटरी से ड्रेन हो गया, मैं पूरा चार्जर लगा लूँ। लग। यस मैम। सृष्टि। ये तो देखो, सब बोलते हैं मार्केट डाउन है, मार्केट डाउन है, मतलब थोड़ी सी मार्केट डाउन है भी, बट अगर आपके पास स्किल्स है ना, तो आपको जॉब मिल जाएगी। Skills and communications are the two things that you need to get a job. Uh, आप जैसे मैंने ये कई बार बोला है, यही एडवाइस मुझे अपने सीनियर्स से मिली है कि फाइंड व्हाट यू लव, फाइंड व्हाट मतलब यू नो क्या करना आपको पसंद है। अगर आपको टेक में जाना है तो टेक की कौन सी डोमेन आपको पसंद है। अगर आपको कुछ और करना है तो जो भी आपको पसंद है वो करो, और उसमें you do it so well that you get better than anybody else. So if you have skills and if you have communication skills, so you can land a job very easily. थैंक यू मैम। Yeah. Ma'am, one question from Devang Rastogi. How was your college experience interesting? College experience interesting. Devank knows is better than anybody else how it was interesting. But yeah, give me 1 minute, please. Ma'am, your video is not visible. Give me 1 minute. Okay, ma'am. Okay. Yeah. So it was interesting because we had to see a lot of ups and downs. मतलब काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, काफ़ी लोगों से बातचीत करी, दोस्त बनाए, फन किया, लड़ाइयाँ करी। तो मतलब ऑल ऑफ इट ऐसा नहीं था कि आप एक जगह बैठे हो या पढ़ रहे हो। अ, रात को 2-2 3-3 बजे तक डिस्कॉर्ड पे बैठ के बातें कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कभी कभी। तो या दैट वाज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। Dave, you're not audible. Give me a. Ma'am, one more question is, ma'am, how important the project and DS is? क्वेश्चन मैंने जो जो आंसर्स अपने सीनियर से पाया। प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट जितना आप प्रोजेक्ट बनाते हो उतना आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं। तो प्रोजेक्ट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और प्रोजेक्ट से आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, प्लस आपकी स्किल्स शोकेस भी होती हैं। तो वेन एवर यू गो टू लुक फॉर इंटर्नशिप और जॉब एनीवेयर समवेयर, द फर्स्ट थिंग दैट दे वांट टू सी आर योर प्रोजेक्ट्स, कि आपने क्या क्या बनाया, आपने क्या क्या सीखा है। तो प्रोजेक्ट्स शोकेस यू, projects define you as well as they help you learn. So projects are very important. And when it comes to DSA, तो to be honest मैं कभी DSA कर नहीं पाई पूरी। मतलब DSA is very important, I agree, but मैं कभी पूरी DSA कर नहीं पाई because it is very hard for me. It's not for everyone, for everybody, but I was more inclined towards डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड। तो आई मतलब जब भी मैं करने बैठती थी तो मुझे लगता था कि मैं चलो वो कर लेती हूँ यार, इसको रहने देती हूँ थोड़ा सा और, एक बार प्रोजेक्ट ख़त्म कर लेती हूँ अपना। फिर जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता था तो मुझे लगता था कि नया प्रोजेक्ट शुरू कर देती हूँ, फिर बीच में पढ़ लेंगे। तो आई कुड नॉट डू इट, बट
if you know DSA, it helps you to uh, build your logic. मतलब अगर आपने DSA कर रखी है तो वो आपका ब्रेन ग्रोथ होता है उससे। तो अगर आपको DSA आती है तो आप काफ़ी चीज़ें इजीली सॉल्व कर सकते हो। या DSA इज इम्पोर्टेंट बट इट इज़ नॉट द कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि अगर आपने DSA नहीं कर पाई तो आपका कुछ होगा ही नहीं। हाँ, बस ये था। Okay, Shagun, you can ask now. Shagun, are you here? Evening. I'm Shagun Tama from ELC. Ma'am, हेलो I am सर। asking that how you deal with disappointments in college life. Yeah, dealing with the disappointment is one of the very difficult tasks. कि, you do not expect disappointment कि जब आपको लगता है कि ये आपसे हो जाएगा पर फिर आपसे वो चीज़ नहीं होती तो समवेयर और दी अदर आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। फिर आप कहते हो कि छोड़ यार, मुझसे तो हो ही नहीं रहा, मैं नहीं कर रही। पर ये नहीं करना है। जब आपसे नहीं हो रहा है या फिर आप कहीं पे स्टक हो गए हो तो आप किसी की हेल्प लो। अगर आपका कोई आपका किसी मतलब आप कहीं से रिजेक्ट हो गए हो तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते थे इसलिए आप रिजेक्ट हुए हो। इट्स बिकॉज यू नीड टू लर्न मोर। मैंने ये कहीं पढ़ा था, बहुत अच्छा सा वो है कि यू नेवर लूज, ईदर यू विन और यू लर्न, राइट। तो मुझे पता है ये सब मैं ऐसे बोल रही हूँ तो लगेगा कि ज्ञान दे रही हूँ, पर ऐसा है। अगर आपको लगता है कि आप थक गए हो या परेशान हो गए हो तो टॉक टू समबडी दैट यू ट्रस्ट। आप उनसे बात करो। इफ he or she is a very good friend, your brother, your sister, your mother, anyone you're comfortable with, आप उनसे बात करो। तो आपको रियलाइज होगा कि इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल बिग थिंग कि अभी दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है और आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो या पहले try to vent it out and then try to listen to everybody around you. So I guess that will help. जैसे ही मेरे साथ हुआ था, एक इंसिडेंट में शेयर करती हूँ। आई वेंट फॉर अ फ्रंट एंड इंटर्नशिप and it was good मतलब it was okayish internship, but once you start coming in fourth year, you want to do internships, you want to do it. So I prepared for it, and then I went till Delhi House to give the interview, but I did not got selected. Then on the next day only, I got another, it was a full-time job का वो था, and I passed 2 3 rounds, and then on the third round they rejected me. I felt like I got rejected from 2 places in continuous 2 days, है ना? And for the role that I think that I will be able to do, but फिर भी मैंने हार नहीं मानी। My friends helped me, and yeah, it's one of my friends told me when I was very shattered because of all these things that some better things are waiting for you. That is why you could not do this. So yeah, trust the process. Thank you, ma'am. Kashvi, you can ask now. Hello, ma'am. I'm back with another question, and I guess ये interesting होगा थोड़ा. जी हाँ जी, Uh, बताओ। Live one day from your college experience. What day would it be, and why? uh, if I could what? Relive. If I could relive one day. That's an interesting question. I'll have to think about it. um, guess the day uh, I performed on the stage. I did what I wanted to do. मतलब
मैंने काफ़ी performances करी हैं, but I'm classically trained and I never got the opportunity to do classical on stage. So I got the opportunity to do classical dance on stage in general. So that was one of the very memorable moments, and I would love to experience it again. Thank you so much. Divyam, you can ask now. Hello, ma'am. Good evening. Good evening. This is Divyam Kumar from AIML department. So my question is that how was your experience with a Geeks for Geeks? Geeks for Geeks. Geeks for Geeks is a very big part of my life. मतलब somewhere or the other, the seniors, the environment, everything that I got from was because of Geeks for Geeks, ABCC. मतलब I went, I did not wanted to fill the form, but one of my seniors encouraged me कि fill the form, do it for non-technical positions or anything, just do it. तो मैंने भर दिया form and I got selected for one of the non-technical positions in second year. तो then I started, working there. तो धीरे धीरे जब मैं उस environment में रही ना, तो it was such a good environment that I wanted to learn more. I wanted to stay with those people and I wanted to learn. I wanted to understand what they are going through, what they are doing, and you know, it helped me connect to a lot of people. मतलब it helped me connect to one of my very big mentors. जितने भी मैंने second year में learning करी है, वो is one of my seniors who used to do web development. I learned web development from him and I got to get connected from him through Geeks for Geeks. So from being a second year promotion coordinator to being a supervisor in third year, it is a very drastic change. So Geeks for Geeks helped me a lot to develop myself technically, professionally, personally, everything. Ma'am, one more question. Yeah. कि आपका बैच पहला बैच था जो AIML का था, तो आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा जैसे कि आपके कोई सीनियर्स नहीं थे सेम डिपार्टमेंट से, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा? टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे इतना पता नहीं था कि मेरा पहला बैच है. मैंने तो बस ऐसे ही कर दिया था. बट समवेयर और द अदर बीइंग द फर्स्ट बैच हेल्प्ड अस सम, मतलब थोड़ी सी उससे थोड़ा सा वो भी रहा कि कंपनीज थोड़ा सा आती थी तो दे वर लिटिल बिट शाय कि अभी फर्स्ट बैच है और समथिंग. बट माय डिपार्टमेंट वाज वेरी मच फोकस्ड टुवर्ड्स गेटिंग अस द जॉब दैट वी डिजर्व्ड और वांटेड, क्योंकि they also wanted their first batch to succeed so that we can create a vision for the department. So somewhere or the other they helped us inspire more and more. तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आई, बट इट वाज नाइस. Okay, ma'am, thank you. Uh, Hi everyone. So sorry to interrupt between the participation interaction. So hi Darshika, hi Dave. हेलो. Thanks a lot Darshika. So let me introduce. I am stuck somewhere. Just sorry to take 2 minutes. So let me introduce. So Darshika is a very prominent mentor of the Salaah community. So this series is also with the way where like the current seniors, the mentors who are just got some offers letters from the campus on campus or somewhere. They are here to share their experience, whatever they're learning, what is the role of their overall development from first to final year. And being an final year student, she's also in the way of the become the alumni of the prominent alumni of the ABS Engineering College. As inside in the fourth year, she itself become the get a chance to interact with you peoples. You are the youngsters. There are a lot of peoples from first year, second year, third year.
So I request Darshika. So firstly, please accept my appreciation and gratitude from the whole Salah community. As you already also a prominent member of Salah, so I think we are equally contributors. So I just want to share some points also. What is the role of the Salah? Number one, and what is your role with your mentors, and how grably that is doesn't matter you got a job in the first hand in the department or second hand, but what is the first experience, then what is that feeling when you got your first offer letter? So I just want to share that experience also with our audience. So yeah, so please proceed with this part also. And second point, what is your worst point when you hit the part and you want to say ki, like this is my point where I stuck ki, like I do not get jobs or someone motivation part, but still now I'm here to share my experience with you all. So I just want these 2 points also covered by you. So yeah, thanks once again to you and Dave. Yeah, please, Darshika, if you agree with me, please give these 2 point answer also. Sure, sir. Sure. So I'd like to thank you for inviting me, and Valuable time. thank you for giving me the Actually, we are opportunity not to be inviting you. You are. It's to be your audience. It's your people. It's like it's your place. It's your family. You just come here, and the difference is like you are come here as a guest, but actually you are the member of Salah. yeah. So just That's introduce what you I the was Salah saying. Yeah. Yeah, that's what I was Yes, saying please. that uh, uh, Salaah. I joined Salaah when I was in second year, and I've learned a lot from Salaah. मतलब Salah had a great impact on me. I got to connect from, uh, with my seniors, super seniors, as well as alumni, right? So it is not easy to, you can connect with your seniors, but you cannot connect with your super seniors or alumni. It is not easy. So Salah helped me a lot to connect with everybody. Salah gave me a stage to speak. I hosted one of the events of Salah, and it gave me a stage, and it helped me to gain that confidence, right? So it has been a very big part of my life as well. Also, uh, in third year, yeah, in third year, Salah created mock interviews. So those mock interviews were, they were so helpful. मतलब कि almost they felt like, मतलब उनकी वजह से एक growth हुई, right? कि कैसे आपको जब आपकी प्लेसमेंट हो, इंटरव्यू हो, फिर क्या होगा? आपको कैसे, you know behave करना है. So yeah, that is one of the things that Salah contributed to me, and I would love to be a part of Salah as long as I can be. They gave me the opportunity to be a part of Salah in second year, and I am delighted to be a mentor in fourth year. So yeah, and the second question that sir said, that what was that feeling of getting the first offer letter. To be honest, Veersa was one of the, well, starting companies only, the third fourth company, I guess, that came in our seventh semester. So I was not expecting myself to get selected, pretty honestly, but I just went with the feeling of that I'll get to know how a real campus drive is, कि मैं सीखूंगी कैसे होता है. But uh, they selected me. मतलब when I went I was very scared. जब मैं जाके बैठी पहले टेस्ट में, पहला टेस्ट was a online test. तो जब मैं वहाँ जाके बैठी तो I was very scared. But the test was pretty okay. मतलब I gave the test and I was confident enough that I will clear the test because I worked enough on me in my second third year. So yeah, and then when I got the offer letter, when I got selected, I got the offer letter a day later, but when I got selected, it felt like it felt like that I I can do it. I did it. You know, from being that student in first year who was scared of that I don't know anything, that I if कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, उस feeling से, and getting placed in one of
the first batches of your college, it felt like it gave a new confidence. So it was out of the world feeling. Yeah. And sir added one more That question. is great, Darshika. So let me add one thing more in this part. So Visa is a company which is like I think, as per my knowledge, so that is a company which is added after so long in the ABS college. And you peoples in this market scenario, if you grab this offer, it's not like you have some luck factor and you grab this part. So you have something which is like very prominent to the batch of like your batch, where the pupils who respect this offer and who respect the way you got this offer in whatever the technology might be. This technology is not your area of interest, but let me complete this part. This company is very like, I think, like, correct me if I am wrong, this company is so long to connect with the ABS after so time, like so many batches have already passed out. So I think you are the first batch, and you are the first batch from your department also. So this is a very prominent offer. Whenever in the history, whenever after 2 or 3 years you are in other companies, so I think this is the offer letter. Might be you discuss with your like roller coaster ride of your engineering life. So I'm correct, Darshika? Yes, sir, you're definitely correct. Uh, yeah, sir, the company had came after a long time and just felt really good. Yeah, and another question that sir asked was that the moment when I thought I got stuck. uh, एक ऐसा मोमेंट सबकी लाइफ में आता है, सबकी इंजीनियरिंग जर्नी में आता है. एंड there was a moment when I did my front end. Always wanted to go in the front end role, and I did a lot of it. And then I started looking for internships. I went through 4 or 5 interviews, and I got rejected in all of it. So I just felt like, ki, why is this happening? I'm doing everything I can. I'm giving good interviews. I also tried to do DSA. So why is this happening? So there was that point in at the end of third year, uh, or in the middle of sixth semester, that why is all of this happening? Ki, why am I not getting selected for any internship or anything? So yeah, it came, and then I got through it. I got through it through uh, self inspiration, as well as my friends, parents, everybody helped me to go through it. And yeah, then I worked more on myself more, and yeah, I'm here today. So एक advice दूंगी कि whenever you feel like you cannot do anything, you can do a lot of things. मतलब you know if I can do this, anybody can do this. I was just you know I was when I came to college, I 11 12th में मैंने JEE की प्रिपरेशन करी थी, but I had to come to this college through UPSC. तो I was a bit shattered that मतलब सारे जैसे ही सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं. एंड देन जब मैं यहाँ पे आई, तो आई ऑल्सो फेल्ट लाइक कि आई डोंट नो एनीथिंग, कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैंने कभी पहले कुछ सीखा नहीं है. तो अगर एक ऐसी स्टूडेंट कैन गेट अ जॉब, then anybody can get a job if they work on themselves. Yes, that's it. Okay, so anyone want to ask any question? I guess there are a lot of things going on in chat which I have not read. How important are projects in DSC? We read that. Ankit Uh, Kumar. Yes, Ankit, you can ask now. Hello, good morning, good night, ma'am. My name is Ankit. I am from CSC AIML branch. I want to ask that what is the best source for doing DSA? बेस्ट सोर्स फॉर डूइंग डीएसए कौन सी लैंग्वेज में करनी है? भाई, टू बी ऑनेस्ट, मैंने डीएसए कभी इतने नो इतने ध्यान से करी नहीं, बट जितना मैं एडवाइस कर सकती हूँ, जो मेरे लिए काम किया है, कि कोई भी एक शीट उठा लो.
तुम्हें बहुत सारी शीट्स दिखेंगी, स्ट्राइवर की शीट है और काफ़ी सारी शीट्स निकाल रखी हैं लोगों ने 500 600 क्वेश्चंस की, एंड स्टार्ट डूइंग इट। कहीं से भी शुरू करो, स्टार्ट डूइंग इट। तो दैट आई गेस इज इम्पोर्टेंट, डूइंग इट इज इम्पोर्टेंट एंड देन यू विल लर्न। आई गेस मैंने कहाँ से किया था, मैंने सी प्लस प्लस में करने की कोशिश की थी, तो मैंने स्ट्राइवर की वीडियोस देखी थी, मैंने बट वाज इट लव अबर की वीडियोस देखी थी, या एंड यहाँ पे आई गेस Devang is here, so he has done DSA Devang and Keshav, so they can help you better with this chart में. Yeah, तो मतलब मैंने जितना किया था, मैंने एक शीट उठा ली थी and then I started doing questions out of that sheet. Thank you, ma'am. Okay, ma'am, let's wind up this session. Thank you so much, ma'am. Thank you, Darshika, ma'am. Thank you, Kunal, sir, for giving the valuable time. Thank you very much for giving me the opportunity to talk to everybody here. Thank you. Dev, we have a question in chat from Vandit. Okay, sir. Let me take it. Have you Okay, so Vandidas, have you explored open source too? Yes, I have explored open source, but you know, uh, open source is very fun. मतलब आप करो तो मतलब ओपन सोर्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप ओपन सोर्स करना सीख गए तो आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो जाती है। वंदित नोज अबाउट ओपन सोर्स अ लॉट, ही हैज़ डन जीसॉक। तो या मतलब ओपन सोर्स मैंने एक्सप्लोर किया था, बट समवेयर और द अदर मैं उस पर ज़्यादा वर्क नहीं कर पाई। आई वॉन्टेड टू वर्क ऑन इट मोर, बट या ओपन सोर्स इज़ वेरी it gives you a big platform to connect with a lot of people. So yeah. एंड एक और एडवाइस दूंगी मैं लास्ट की, जिन्हों आप कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो, फर्स्ट ईयर के लिए कह रही हूँ मैं कि कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो एंड स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद पीपल इफ़ यू वांट टू गो टू टेक। मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि देर आर कम्युनिटीज़ इन आवर कॉलेज जो डिस्कॉर्ड पे चलती हैं एंड जो जनरली भी चलती हैं, तो वो कम्युनिटीज़ अगर आप ज्वाइन करोगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। वहाँ पे तुम्हें एक इन्वायरमेंट मिलेगा, टेक्निकल इन्वायरमेंट। इफ़ यू वांट टू गो टू हैकाथॉन्स, यू विल गेट पार्टनर्स, यू विल गेट टीममेट्स, तो it will help you build up connections and it will help you build up your technical knowledge as well. Thank you, ma'am, for answering my question. Sam Abhinav asked, did you try for off-campus placements? Yes, I did try for off-campus placements. या मतलब जब आप ट्राई करते हो तो आप सब कुछ ट्राई करते हो, तो मैंने भी ट्राई किया था ऑफ कैंपस के लिए, बट ज़्यादा ट्राई नहीं किया था क्योंकि जब कंपनीज आना शुरू ही हुई थी तभी मेरी प्लेसमेंट हो गई थी। तो या and if you want to connect to me or any of your seniors, no, so you can start joining Discord. That's what I would say. Discord had a big impact on me because I could connect to a lot of people there. Guess that's it. Dev, are you there? Yes, ma'am. Yeah. No. I thought my internet was not working. That's why I asked. So yeah, Anyone, ma'am, that's who want to ask any question? I think everyone have done. people from this college ever selected in Microsoft Engage. Yes, there are some people who got selected in Microsoft Engage from my years. So yeah.
If you have the skills, you can get selected anywhere. Ma'am, one question from Abhinav Mishra. Did you try off-campus placement? Yeah, yes, I did try it. Everybody tries off campus, so I also tried it. I just wanted to gain experience. So yeah. But what do they ask in Microsoft Engage? How do you put it out? I did not apply for Microsoft Engage, but I can help you connect to somebody who got selected in Microsoft Engage, Abhinav. Uh, just ping me on Discord or somewhere. So yeah. Okay, ma'am. So let's bind up this session. Thank you so much for coming and give us your valuable time. Thank you for having me here. It's, it's a Most big, welcome, ma'am. honor for me to come here. Yes, ma'am. So, ma'am, अगर आप कोई रिव्यू देना चाहें तो Uh, Review for the event. यस मैम. Uh, I think it's a great initiative. कि, you are helping students connect to their seniors. मतलब, fourth year वाले seniors से तो वैसे भी कम ही connect हो पाता है. So, yeah, it's a very great initiative, and you still have a lot of people here attending, so it means it's a great success. ओके मैम. थैंक यू मैम. Come. एवरीवन यू कैन लीव नाउ.